Hello children, so this is second part of Kathmandu chapter, second and last. I indulge myself mindlessly by a bar of marzipan from last para of stanza 4. A corn on the cob roasted in a charcoal brazier on the pavement, a couple of love story comics, and even a Reader's Digest. All this I was down with Coca-Cola and a now sitting orange drink and feel much the better for it. अभी बिना सोचे समझे व्यस्त हो जाता हूँ। एक मंजी पे पैदल पथ से कोयले पर भुनी हुई छली जिस पर नींबू के साथ नमक और मिर्च वाली होती है, कुछ प्रेम कथाओं की पुस्तकें तथा एक रीडर्स डाइजेस्ट भी खरीद लेता हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं कोका कोला तथा बकबके संतरे के पेय के साथ पी लेता हूँ और अब बेहतर अनुभव करता हूँ। Para 5. I consider what route I should take back home. If I were propelled by enthusiasm for travel Persia, I would go by bus and train to Patna, then sail up the Gangas past Banaras to Allahabad, then up the Jumma past Agra to Delhi. But I am too exhausted and homesick. Today is the last day of August. मैं वापस घर जाने के मार्ग में सोचता हूँ। यदि मैं उसी खुशी से यात्रा के लिए प्रेरित होता तो मैं मोटर तथा रेलगाड़ी से पटना जाता, फिर गंगा नदी में नाव से बनारस से गुजरता हुआ इलाहाबाद जाता, फिर यमुना नदी में से आगरा से गुजरकर दिल्ली जाता। परंतु मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे घर की याद सताती है। आज अगस्त का अंतिम दिन है। आई एंटर नेपाल एयरलाइन ऑफिस एंड बाय ए टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट। मैं नेपाल वायुयान सेवा के कार्यालय में प्रवेश करता हूँ और कल की उड़ान के लिए टिकट खरीद लेता हूँ। आई लुक एट द फ्लूइड सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। मैं होटल के पास मैदान के कोने में खड़े हुए बांसुरी बेचने वाले को देखता हूँ। इन हिज हैंड इन अ पोल विथ एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 or 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शन लाइक द क्विल्स ऑफ अ परप्यूकिन। मैं उसके हाथ में एक लंबा सा डंडा है जिसके सिरे पर बंधी हुई वस्तु से झाऊसे के कांटों की भांति सभी दिशाओं में 50 या 60 बांसुरियां बाहर निकलती दिखाई देती हैं। दे आर ऑफ बैम्बू, ये सभी बांस की हैं। देर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, में चौमुखी बांसुरियां भी हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, selects in a flute and plays for a few minutes. The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawkers' cries. समय समय पर वह इस डंडे को जमीन पर खड़ा कर देता है और उसमें से एक बांसुरी चुनकर कुछ मिनटों के लिए उसे बजाता है और बांसुरी की स्पष्ट आवाज यातायात तथा फेरी वालों की आवाज से तेज होती है। He plays slowly, meditatively, without excessive display. He does not shout out his words. Occasionally he makes a sale, but in a curiously off-handed way, as if this were incidental to his enterprise. वह धीरे धीरे ध्यानमग्न होकर बिना अधिक दिखावे के बांसुरी बजाता है। वह अपने सामान के बारे में चिल्लाता नहीं है। कभी कभी वह सामान बेचता भी है, परंतु एक विचित्र लापरवाही से, जैसे कि यह कार्य उसके कार्य का एक भाग हो। Sometimes he breaks off
playing to talk to the fruit seller. I imagine that this has been the pattern of his life for years. कभी कभी वह फल विक्रेता से बात करने के लिए बांसुरी बजाना बंद कर देता है। मैं कल्पना करता हूँ कि उसके जीवन का यही ढंग कई वर्षों से चल रहा है। I find it difficult to tear myself away from the square. मैं स्वयं उस मैदान से अलग करने में कठिनाई अनुभव करता हूँ। Flute music always does this to me. It is at once the most universal and most particular of sound. बांसुरी का संगीत मुझे सदा ऐसा बना देता है। यह तत्काल सार्वभौमिक तथा सबसे खास आवाज है। There is no culture that doesn't have its flute, the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear और breathy flutes of South America. कोई भी संस्कृति ऐसी नहीं जिसकी अपनी अपनी बांसुरी न हो। जापान की शाकुहाची, अति प्राचीन हिंदुस्तानी संगीत की गहरी बांसुरी, दक्षिण अमेरिका की अस्पष्ट हवा वाली बांसुरी, चीन की ऊंची आवाज वाली बांसुरी। It has its specific fingering and compass. It waves its own association aid to hear any fluid is it sends to me, to be drawn into the commonly of all mankind, to be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice. Its motive force to is living breath. It too needs to pause and breathe before it can go on. प्रत्येक का अपना विस्तार क्षेत्र तथा उंगलियां चलाने का ढंग है। यह अपना विशेष संबंध बनाती है। फिर भी मुझे लगता है कि बांसुरी सुनने का अर्थ है मनुष्य जाति के साथ साधारण संबंध जोड़ लेना। संगीत द्वारा मनुष्य की आवाज के वाक्य और वाक्यांशों की भांति प्रभावित होना, इसकी प्रेरणा शक्ति सजीव श्वास है। रहने के लिए इसे भी रुकने व सांस लेने की आवश्यकता होती है। That I can be so affected by a few familiar phrases on the bansuri surprises me at first, for on the previous occasion that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do. सर्वप्रथम मैं इस बात पर आश्चर्य करता हूँ कि बांसुरी की कुछ जानी पहचानी आवाज़ें मुझे इतना अट्रैक्ट कर सकती हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैं काफ़ी लंबे समय के पश्चात विदेश से वापस आया था तो मैंने कभी इस प्रकार का विवरण देखा तथा निश्चय ही मैंने इन बातों को इतना महत्व नहीं दिया था जितना मैं अब दे रहा हूँ। विक्रम सेठ फ्रॉम हेवन लेक. This is the writer. So your chapter is finished. Now look at your question answer. Name the two temples the author visited in Kathmandu. Pasupati temple and the Budhanath Stup. Second, the writer says, all this I washed down the Coca-Cola. What does all this refer to? All this refers to the war of marzipan, a sweet made with grafted almond, and love story comics, and a Reader's Digest, which the author vowed. Question number 3. What does Bikram Seth compare to the quills of a porcupine? The author compares the quill of porcupine to the bansuris attached to the top of a pole and protruding, protruding in all directions. Name 5 kinds of flute. First, bansuri in Hindi, shakuhachi in Japanese,
Read, R-E-E-D, recorder. Next question B. What differences does the author not note between the flute seller and the other hawkers? Answer. The authors standing in the Kathmandu Bazaar. Hawkers are shouting their wares, but the flute seller is standing in a corner to the square. He does not shout. He only plays the flute for a few minutes without much display. Occasionally, he makes a sale. Now question number 2 of B. What is the belief in Pasupatinath about the end of Kali Yuga? At Pasupatinath, there is a cave, full stop. It is believed that the goddess is imprisoned in that cave, full stop. When the cave emerges fully, the goddess will escape and the period of Kali Yuga will end. Question number 3. Compare and contrast the atmosphere in around the Bodhnath Shrine with the Pasupatinath temple. Answer. At Pasupatinath temple, the atmosphere is of confusion on the full stop. On the other hand, there is a sense of stillness at Bodhnath Stup. It is all disorder at the road outside the Pasupatinath temple, full stop. Some people try to enter the temple forcibly, full stop. They are stopped by the policeman, full stop. Monkeys fly and chase each other, full stop. One monkey jumps on the Shivlinga, full stop. In sharp contrast to it, the atmosphere around Bodhnath Shrine is different, full stop. There was no crowd and confusion, full stop. The atmosphere is very calm, full stop and end. Second, how does the author describe Kathmandu Bazaar? The author describes the bazaar of Kathmandu in detail, full stop. The bazaar is full of life, full stop. There are flute sellers, fruit sellers, flute, F-L-U-T-E, flute sellers, fruit sellers, hawkers, etc. full stop. There are many shops selling Western cosmetics, full stop. There are shops selling film rolls, chocolates, copper utensils and Nepalese antiques, full stop. There are also the sounds of car horns, bicycle bells, stray cows, etc. full stop. Vendors are shouting to sell their wares, full stop. The author buys a bar of marzipan, full stop. You find a vendor selling corn, full stop. He buys a cob of corn, full stop. He drinks Coca-Cola and orange juice, full stop. He buys 2 magazines, full stop. The market is very crowded, full stop. Question number 3. To hear any flute is to be drawn into the commonality of all mankind. The author was standing in the answer Kathmandu Bazaar, full stop. He heard the sweet sound of flute, full stop. A flute seller was playing the flute, full stop. Its sound was heard above the noise and confusion in the bazaar, full stop. The author could not move forward, full stop. He was so enthralled by the flute music, full stop. The flute music is the most universal and most particular of sounds, full stop. Almost all the cultures in the world have flute, full stop. The flute is present in the Japanese, Chinese, Hindustani, and South American cultures, full stop. Each has its specific fingering, full stop. The flute has its own associations. The flute has its own associations, full stop. The motive force of the flute is the living breath, full stop. Its music appeals to the heart of every human being, full stop. So, the author rightly says that to hear flute is to be drawn into the
commonality of man, all mankind. Full stop.